अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड वेदाई के। जिम पहुंच चुका हूँ, लेकिन जिम अभी बंद है इस वक्त। जिम पे मैं अंदर जाके अपना वर्कआउट करता हूँ। सो गाइस, अभी इंतज़ार है मुझे जिम ओनर को जल्दी से आए और जिम को खोले और टाइम ज़ाया किए बिना मैं एक्सरसाइज करूँ अपनी। आज मेरा वर्कआउट है शोल्डर का, तो मैं आई होप कि आपको शोल्डर का वर्कआउट पसंद आएगा। शोल्डर का वर्कआउट अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना। लेकिन आज काफ़ी देर हो गई, अभी तक जिम खोला ही नहीं है। अरे कहाँ रह गया यार, जल्दी यार जिम खोले ताकि मैं फटाफट एक्सरसाइज करूँ। टाइम भी कम है और आज ही ये लेट हुआ। और आज मैं बड़ा एक माइंड बना के आया था कि वर्कआउट बड़ा ज़बरदस्त लगाना है और टाइम भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब भी इस तरह मैं आता हूँ माइंड बना के और जल्दी आता हूँ तो हमेशा यही होता है कि जिम देर से खुलता है और टाइम कम होता है और फिर फटाफट एक्सरसाइज करनी होती है। और आज भी यही हुआ है, अभी तक जिम खुला ही नहीं है। और फाइनली भाई ये जिम वाले आ गए, लेट हुए लेकिन आ गए ये तो। फाइनली मैं जिम आ चुका हूँ। नहीं करने लगा हूँ वार्म अप के बाद नहीं मैं प्रॉपर शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करना है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब पहले प्रेस करना, एक्सरसाइज करते मैंने वार्म तो कर लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वर्कआउट शोल्डर का। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट करूँगा वो है शोल्डर डंबल प्रेस। साइड मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने मैक्सिमम 20 रैंक की मैंने किए। मेरा लास्ट सेट में चल रहा है, इसमें वेट भी नहीं सकूँगा और कोशिश करूँगी बना वेट कर सकूँ।
पहली एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सीटेड बेंच का ही इस्तेमाल करते हुए इस पर एक्सरसाइज में करूँगा फ्रंट डंबल बेल्ट बोथ हैंड्स के साथ। Exercise side raises lateral balance different challenges just take 10 seconds right with my another exercise lateral balance number using simply So guys, पहला सेट मेरा हो चुका है। So inshallah I will do my next set. Same weight and same repetition. ये होता है इसमें मैं वेट इंक्रीज करूँगा। Next set. गाइस मेरा नेक्स्ट सेट भी कंप्लीट हुआ है। 15 सेकंड की मैं ब्रेक करूँगा देना है। फिर माय थर्ड सेट सेम वेट सेम वेट ये माना मेरा ये सांसें इसलिए ले रहा हूँ ताकि रहे। अरे ये हो गया
सो गाइस, मेरी ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब मैं सीटेड बेंच का यूज़ करूँगा और रेजिस्ट डंबल बोथ हैंड्स के साथ में मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सेम इसी तरह से मैं सेम वेट के साथ रेपिटेशन भी हाई रखूँगा, क्योंकि मैं इतना ही समझता हूँ कि वेट मैं यूज़ कर सकता हूँ या मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं हेवी करने जा रहा। अगर आप कर सकते हैं तो बेशक आप वेट यूज़ करें। Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel So guys, my next exercise is rear tech deck fly. So इसके भी मैं 3 सेट करूँगा सेम लाइट वेट के साथ, हाई रिपीटिशन. देन आई मूव टू हायर वेट, देन ड्रॉप reps, and then move my last and heavier set, and I drop my reps maybe something in 8 and 10. So I'm gonna show you how you do this exercise for food.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. So guys, मेरी लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की। ये मशीन आप सामने देख रहे हैं, ये मशीन मैं यूज़ करूँगा शर्ट के लिए, शोल्डर शर्ट। डंबल से भी लगा सकते हैं, बारबल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस मशीन का यूज़ करूँगा। सेम मैं इसके 3 सेट लगाऊँगा। सो मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगा। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सो गाइस, मेरी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। माय वर्कआउट इज़ फिनिश्ड। सो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो और वर्कआउट अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कआउट में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my